Good morning. Today I will take up few problems regarding to the helical coil spring. So, first problem which I have taken here, try to understand what is there. A helical spring is made of wire of 6 mm diameter. So here helical spring एक वायर से बना है, its diameter is given, this is 6 mm diameter and the outside diameter is 75 mm. If the permissible shear stress is 350 MPa and modulus of rigidity, this is also given, 84 kilonewton per mm square. Find the axial load which the spring can carry and the deflection per unit time. Right. So this is the question. This is given to us. Now just see, first of all, before starting that any numerical, any question, first you will read it quite carefully what is written here, and then you will write down what is given here. So first of all, I will write down given. What is given? Just see. Given क्या है आपका? So given is a helical spring is made of wire of 6 mm diameter. So you can say diameter of spring wire D. This is given to you. This is 6 mm. Right? And the outside diameter is 75 mm. This outside diameter is what? This is the outside diameter of the coil. This is, you must not confuse yourself that this is the mean diameter. No, mean diameter is not given. So this is the outside diameter of the coil, which I will donate it by D naught. So you can say D naught. This is the outside diameter of the coil. This is given as 75 mm. If the permissible shear stress is 350 MPa, so permissible shear stress tau is given as 350 MPa, and the modulus of rigidity, that is G, modulus of rigidity, that is G, is given as 84 into 10 raised to power 3. This is because this is in kilonewton per mm square, so I will convert it Newton mm per meter square. So this is Newton per mm square, right? And what we have to calculate? Yes, see, what we have to calculate? Find the axial load which the spring can carry. So axial load, if W I will denote as the axial load. So this we have to calculate. And the second one is deflection per unit turn. So what is deflection per unit turn? Delta upon N. This we have to calculate. So first of all, first you read the problem. What is given in the problem here? You write down all the parameters which is given in the problem. This is the parameters here, right? These are the parameters. Now, next one is what you have to calculate. We have to calculate the axial load and we have to calculate the deflection per unit turn. Right? This we have to calculate. Now, just see here, before starting the problem, first you try to understand that you have to calculate this axial load and this, right? So, axial load कहाँ से calculate करते हैं? क्योंकि आपको shear stress इधर दिया है. Shear stress is given to you. That is tau is given to you. So, you can say tau is equal to this, you know, tau किसके बराबर है? 8 WD into pi dq, right? So this is the formula of this tau, or you can say tau maximum. So the shear stress is 8 WD pi dq. So here tau is given to you. This is 350 MPa. This is here. W you have to calculate. D is the, D क्या है आपका? Mean diameter. तो just see here, क्या आपको यहाँ पे mean diameter दिया है? No, mean diameter नहीं दिया है. So diameter of the wire is दिया.
It means that the first we will find out the mean diameter. अगर हमें mean diameter पता चल जाता है, so then we can calculate the axial load. We will calculate the axial load, right? तो हम axial load को calculate कर लेंगे, right? तो इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में इसको सॉल्व करूंगा. फर्स्ट आई विल कंसिडर I am neglecting the effect of curvature, right? And the second one is I am considering the effect of the curvature, right? तो इस प्रॉब्लम को first I will say, so when I was not considering the effect of curvature, जब मैं effect of curvature को consider नहीं करूंगा तो उसमें एक आपका फैक्टर होता है that is called the shear stress factor. तो shear stress factor आपका Ks is equal to 1 plus 1 upon 2c, right? So 1 plus 1 upon 1 plus 2p c, right? So you can say that tau max, considering the shear stress factor, अगर हम shear stress factor को consider करते हैं into 8wd upon pi dq, right? So इसका मतलब Ks को भी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? C. तो C क्या है? What is C? C is your the spring index. तो C क्या है आपका? C is spring index. C is your the spring index, and this is also equal to D upon. This is also equal to D upon D. So from here, if you will see these parameters you have to calculate. From here you can say that D is very important parameter to find out here, because spring index निकालने में भी आपको D को calculate करना पड़ेगा, और जो जहां पर है आपको जहां पर ये जो फॉर्मूला जहां पर भी D को calculate करना है. So first we will find out D, that is the mean diameter, right? Just see here. So mean diameter इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. You just write down these things. I will write down the given to the side. So I think you have noted down here. So when given is this net, लिख देता हूं so that I will get some space to write down. तो प्रॉब्लम में आपको दिया है diameter of the spring wire, that is D is equal to 6 mm. So D naught 75 mm. G is equal to 84 into 10 raised to the 3 Newton per mm square, and tau max, you can say this is 350 MPa. So these things are given. We have to calculate axial load, that is W, and the deflection per unit turn. This we have to calculate, right? So these things we have to calculate. Right. Just see here. Now I will start the problem. This is given here. Try to understand. पहले मैं करूंगा neglecting the effect of curvature. Neglecting the effect of curvature, right? So first पे क्या करूंगा सर? Mean diameter निकाल लेता हूं. This I told you that mean diameter, outer diameter is given. So mean diameter D is equal to D naught minus D. ये फार्मूला याद रखिए. जब आपको outer diameter of the spring coil दिया है and diameter of the small wire is also given, you can calculate the mean diameter.
So you can say mean diameter here is 75 minus 6. This is equal to 69 mm. Right? Second, I will calculate the spring index. क्यों? क्योंकि जो मैं आपका shear stress factor लूंगा, that is equal to 1 plus 1 upon 2c. So spring index भी मैं निकालूंगा. So spring index आपका c जो है, this is d upon d. So you can say this is 69 upon 6. So this is equal to 11.3. So ये दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली. This two things you have calculated. Now, as you know, when what is the tau? Tau मैंने आपको अभी बताया. ये हमें shear stress factor को कंसीडर करें Ks into 8 WD into pi dq. राइट? ये फार्मूला आपका. तो इसका मतलब है Ks shear stress factor निकालना पड़ेगा. तो shear stress factor क्या होगा इसमें? जो shear stress factor Ks is equal to, मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं. Ks is equal to 1 upon 1 plus 2c. This is equal to 1 plus 1 upon 2c. This is right. तो इसमें आप Ks निकाल लीजिए. So Ks is equal to, you calculate this. Ks क्या आएगा आपका? Ks is equal to 1 plus 1 upon 2 into c. What is c? C we have calculated, I think 11.3. So right, तो इसको सॉल्व करो. What is your Ks? 1 plus 1 this is equal to 1.043. So therefore this is equal to 1, जहां पे लिखेंगे हम, तो Ks is equal to 1.043. राइट? ठीक है. तो आप यहां से you substitute all the values and you calculate the W here. I will do this problem and just see. So tau is given to you, this tau x is given to you, this is 350. Substitute all values there. That is 350 is equal to 1.043 into 8 into 8. W you have to calculate. D आपने कितना निकाला? 69 divided by pi. D आपका है 6, तो 6 का होल क्यूब. राइट? सो देयरफॉर W इज इक्वल टू, W आप कैलकुलेट कर लो. सो W इज इक्वल टू 350 इंटू 6 का होल क्यूब इंटू पाई डिवाइडेड बाई 1.03 जब 8 जब 69. ठीक है. So these are the values we will use this. Find out what is the value here. So 3506 cube.
This is 412.3. So this is your W is your 412.3 kg, right? So this is your actual load on the spring. Now, next one, we will calculate. What we have to calculate? Delta Yn. Deflection per unit term. We have to calculate this. So you know what is delta? Delta का क्या है आपके पास फार्मूला? So delta is equal to 8W dq into n divided by g d raised to power 4. So this is your delta. 8W dq into n divided by g d 4. So or you can say हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा बाई n. तो n को इधर ले आइए आप. So this is equal to delta by n. This is equal to 8 So delta by n here, so delta by n is equal to 8W dq g d by 4, right? तो जहां पे आप सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो क्या आएगा इसमें? डेल्टा बाई n, दिस इज इक्वल टू 8. W you have calculated 412.3. So this is 412.3. D is your this how much D? 69. So 69 whole cube divided by the value of G is given 84. 84 into 10 raised to power 3, and the value of D, small d is given, that is 6 raised to power 4. Right? So calculate this, how much it comes. Use your calculators. Find out how much it will come. Just see. Calculator इस्तेमाल करो. 8 into 413 into 69 raised to power 3 divided by 84 into 1 raised to power 3 into 6 raised to power 4. This is your 9.95. Deflection per unit term. This is your 9.95 mm. So this is clear to you. So ये पहला पार्ट मैंने किया था when I had not considered the effect of the curvature, right? So in both the cases I have calculated the axial load as well as the deflection per unit term I have calculated. Now the second case I will take when I am considering the effect of curvature. उसमें देखिए क्या करना है. So I will rub it now. Second case है आपका considering the effect of curvature. Let us try to understand here. When we will consider the effect of curvature, we have to take the Bell stress factor.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, राइट? हमें यहाँ पे बैरल स्ट्रेस फैक्टर वी हैव टू टेक। सो तो वहां पे बैरल स्ट्रेस फैक्टर क्या है आपका? बैरल स्ट्रेस फैक्टर, suppose this is your denoted by K, 4C minus 1 divided by 4C minus 4 plus 0.615 upon C. So this is your बैरल स्ट्रेस फैक्टर। तो जो C की वैल्यू थी, दिस यू हैव कैलकुलेटेड, जो वैल्यू C की थी दिस यू हैव कैलकुलेटेड। C क्या था आपका? D अपॉन D, तो D आपका था 69 divided by 6, so I think this is about 11.3। तो C की वैल्यू आपकी थी 11.3। तो सबसे पहले हम बैरल स्ट्रेस फैक्टर निकालेंगे, राइट? तो बैरल स्ट्रेस फैक्टर आपका K क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू 4 into 11.3 minus 1, 4 into 11.3 minus 4 plus 0.615 C. What is C again? 11.3, right? So we will calculate this. So this is equal to, so K is equal to 1.123. So your barrel stress factor, right? Now rest everything is same. If you will say I will calculate it, otherwise what you have to do, you have to just use this problem, use this formula first to calculate the axial load। तो axial load कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? axial load किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला, दिस इज tau is equal to K into 8 WD by dq। So K की value you have calculated, rest the value of D and dq is with you, and you can calculate the axial load। If you say I will solve all of the problems, I will do this problem, I will give the complete solution of this। So W is equal to, you will substitute the values here, so this is equal to R, or you can say R, tau is 350 is equal to
K you have calculated 1.123 into 8 into W आपको कैलकुलेट करना है. So D is your how much? D is your 69, right? So D is your 69 pi into D. Oh, your D is small 6, so 6 whole cube, right? So W, therefore W is equal to किसके बराबर आएगा? 350 into pi into 6 whole cube divided by 1.123 into 8 into 69. Right? So again, just see the calculator, check it. What is its value? 350 into 4 into 6 raised to power 3 divided by 1.123 into 869 382.9. So this is your 382.9 Newton, right? So axial load you have calculated. Now the next one you have to calculate delta by n, right? So delta आपको कहा है, delta is equal to 8W dq into n divided by GD4, right? Therefore delta divided by n, this is equal to 8W dq divided by G into D4. So substitute again the values. So इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. Therefore delta n, this is equal to 8 into 382.9. You can take 383 also. You can take 383 into what is D? D is your 69 whole cube, and the value of G is given to you 84 into 10 raised to power 3, and the value of D4, this is 6 raised to power 4. Now you calculate this and find out the solution, find out the answer of this. So इसको calculate करते हैं हम. Just see here, 8 into 3 into 6 9 raised to power 3 divided by 84 into 3 into 6 raised to power 4. This is 9.24 mm. So this is your 9.24 mm. So this is the answer. So I think this first question is very simple one. It is just the basic question which I have given to you, and then I will start giving you the big questions and finally the design of the helical spring. So one more question like this. Easy question we will do first,
and then we will start the other one. So first of all, I will write down the questions and then I will explain it. So I will just write down the question first and then I will give the solution. Now just see second problem. This is also very easy one. First I am taking some easy problem, then I will go the design of the helical spring. First I will just start some easy problems so that you can understand the method how to start the numericals. So design a helical, design a spring for a balance. Just first you read this. Design a spring for a balance to measure 0 to 1000 Newton over a scale, length 80 mm. Right? The spring is enclosed in the casing of 25 mm dia. The approximate number of turns is 30. Modulus of rigidity, this is also given 85 kilonewton per mm square. Calculate the maximum shear stress induced. Right? So I will write down the given here. So given क्या दिया है? Design a spring for a balance to measure from 0 to 1000 at Newton. तो आप कह सकते हैं कि 0 से हम 1000 न्यूटन तक इसको मेजर कर सकते हैं. तो we will take the maximum load here. So you can say W is equal to 1000 Newton over a scale लेंथ 80 mm. तो स्केल लेंथ आपकी 80 mm दिया है कि अगर हम 1000 न्यूटन तक इसको मेजर करेंगे तो मैक्सिमम स्केल लेंथ क्या है 80 mm. सो यू कैन से डिफ्लेक्शन इज योर्स 80 mm. राइट. The spring is enclosed in the casing of 25 mm diameter. This is very important line. Just try to understand. ये जो स्प्रिंग है दिस इज एनक्लोज्ड इन द केसिंग. एक केसिंग में स्प्रिंग को एनक्लोज किया है जिसका जो डायमीटर है दैट इज द 25 mm डायमीटर. तो ये जो आपका डायमीटर है ये डायमीटर किसका है? केसिंग का. सो यू कैन से डायमीटर ऑफ केसिंग वेयर द स्प्रिंग इज एनक्लोज्ड. जिसके बीच में स्प्रिंग को इनक्लोज किया है तो ये आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 25 mm. राइट. Number of turns is 30. So number of turn and this is number of turn number of turns is equal to 30. The modulus of rigidity, this is given as G, is equal to 85 kilo Newton per mm square. And what we have to calculate? Maximum shear stress. We have to calculate also maximum shear stress. So पहले हमें क्या करना है? डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग. राइट. सो दीज थिंग्स आर गिवन टू यू. तो अब इसको हमें डिजाइन करना है. राइट. अब देखिए जब डिजाइन आपने करना है तो डिजाइन में जो मेन स्टार्ट है आपका, एक तो आपको डायमीटर ऑफ वायर चाहिए जबकि यहां पे नहीं दिया है, और दूसरा मीन डायमीटर चाहिए. सो लेट स्टार्ट करो सॉल्यूशन. लेट डी इज द डायमीटर ऑफ द spring wire, right, and D is your mean diameter.
ये दो चीजें हमें डिजाइन करना है, राइट। सो आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल, आउटर जो डायमीटर है आपका स्प्रिंग काइल का, जो आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग काइल का है, आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल, the outer diameter of the spring coil, this is D naught, this is equal to D plus D, right? So outer diameter of the spring coil, that is D plus D, right? अब देखिए, ना हमारे पास d है ना हमारे पास स्मॉल d की वैल्यू है, राइट। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जस्ट सी हियर, डिजाइन करना है हमें, मीन डायमीटर निकालना है एंड आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल d नॉट, ये आपका अगर है तो दिस इज इक्वल टू d प्लस d, राइट। ये हमें किस लिए निकालना है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल एंड वी हैव टू चेक इट whether this spring coil diameter which we will calculate from here, this should be less than the 25 mm. जी आपको अंडरस्टैंड हुआ, यू अंडरस्टैंड दिस, क्यों, क्योंकि हमने स्प्रिंग को एक केसिंग के बीच में रखा है, तो और केसिंग का जो डायमीटर है दिस इज 25 mm, so only you can keep the thing in the casing when it is having the diameter is less than 25 mm. So it means the diameter that we will calculate here, the outer diameter of the spring coil, what we will calculate here, that should be less than the 25 mm. वो आपका 25 mm से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जब वो डायमीटर आपका 25 mm से लेस होगा तो it means that your design is safe, or you can say what the diameter you have calculated, the wire diameter of the wire and the mean diameter of the spring, if it will come within this parameter, means if it is less than, if we will calculate the outer diameter by adding these two, if it is less than this, so it means that your design is safe, right? Now just see here, हमें क्या दिया है, लोड दिया है, डिफ्लेक्शन दिया है and number of turns दिया है। So we will use here the formula of the deflection. तो deflection का क्या formula होता है, so आपको पता है deflection is equal to 8W d cube into n g into d by 4, right? ये आपका deflection होता है, right? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है जो आपका स्प्रिंग रेट है C, दिस इज इक्वल टू D अपॉन D, राइट। तो मैं D क्यूब और स्मॉल d क्यूब को, therefore D क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल d क्यूब, दिस इज इक्वल टू C क्यूब आई कैन राइट, राइट। तो जहां पे क्या, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 8 इंटू W इंटू C क्यूब टू N इंटू G इंटू D, राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, D क्यूब बाई D4 था ये, तो इफ आई विल टेक D क्यूब बाई स्मॉल d क्यूब, दिस इज इक्वल टू C क्यूब, तो ये C क्यूब जहां पे ले लिया हमने, तो नीचे आपके पास क्या रह गया, D ओनली, so this is 8WC cube into NG into D. Now substitute all the values here, right? तो आप क्या करें, values substitute करें, so delta is how much, delta is given to you 80 mm, so you can say 80 into 8, W you will take 1000, right? N is given as 30 turns. The value of G, the value of G is how much?
85 into 10 raised to power 3 एंड डी आपको कैलकुलेट करना है, डी आपके पास नहीं, राइट। एट डब्ल्यू, अब सी क्यू की तो नहीं है, सो दिस इज योर सी क्यू, राइट। 85. So from here C cube upon D, right? C cube upon D ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ना ही हमारे पास C cube है ना हमारे पास D है. So we will say here and it's rub it. Now there is no use of this. So therefore C cube upon D इसको कैलकुलेट करेंगे हम. So 80 into 85 into 10 raised to power 3 divided by 8 into 1000 into 30. Just see the problem. Just see here. Now we again use the calculator and find out what is your C. This is 80 into 85 into 10 raised to power 3 divided by 8 into 1000. So this is 28.33. So this is your 28.33. So this is 28.33. Right? Now just see again. अब C क्यूब अपॉन D आपको मिल गया, ठीक है। तो ना ही आपके पास D है, स्मॉल D है, तो C जो आपका है ये भी D बाई D होता है। इसलिए हम क्या करें, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम द बायर डायमीटर इज D. Wire diameter D is 4 mm or 5 mm, whatever you want to assume. So let us assume wire diameter D is 4 mm, assume कर लेते हैं, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, therefore C cube D की जगह 4, 28.33, राइट। और यू कैन से C की वैल्यू कैलकुलेट करो इधर से, दिस इज 28.33 multiplied by 4, so this is 113.32. So this is 113. Therefore, C cube is equal to 113.32. And what is your C now? This is 113.2.
C is this 4.83. So therefore C is your 4.83, right? तो अगर आपका C जहां से आपको वैल्यू मिल गई, राइट, तो मैंने जैसे आपको बोला C आपका किसके बराबर है, D अपॉन D के बराबर, तो आप कह सकते हैं दैट इज D अपॉन D is 4.83. Is there any problem? तो D स्मॉल d हमने क्या अज्यूम किया था, राइट, स्मॉल d को क्या अज्यूम किया था, तो देयरफॉर स्मॉल d आपका क्या था, 4 mm अज्यूम किया हमने, सो दिस इज इक्वल टू 4.83 into 4. So 4.83 into 4, this is equal to how much? 4.83 into 4. This is 19.32. So this is your 19.32. अब देखिए जो मेन कंसेप्ट का पॉइंट है इसमें, अब स्मॉल डी आपने निकाल लिया 4 mm, ये आपने अज्यूम किया और ऑन दैट बेसिस यू हैव कैलकुलेटेड 19.32. अब देखिए वी हैव टू डिजाइन, वी हैव टू चेक द डिजाइन, और इसमें उन्होंने एक कंडीशन दिया था कि वी हैव टू एनक्लोज द स्प्रिंग इन द केस, और जो केस का जो डायमीटर था केस का 25 mm. The point is, if I have assumed the spring wire 4 mm and on that basis I have calculated the mean diameter of the spring. If I will calculate the outer diameter of the spring coil, and if that outer diameter of the spring coil is less than the diameter of the casing, it means the spring wire which I have assumed and that is your correct, right? अगर वो विद इन लिमिट आता है, अगर आप कोई वायर अज्यूम करते हो डाया और उसको करने के बाद अगर आप आउटर डायमीटर स्प्रिंग काइल का निकालते, एंड इफ दैट डायमीटर आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल is more than that this 25 mm, it means that whatever the assumption we have done, that assumption is not right. Now to check this, अब इसको हम चेक करेंगे, तो इसमें नोट कर लीजिए आप, G आपने 4 mm अज्यूम किया है और कैपिटल G आपका 19.32 में इधर लिख लेता हूं. सो D क्या था आपका 4 mm और कैपिटल D आपका था 19.32 mm, राइट. अब मुझे ये देखना है आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल, मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा आउटर डायमीटर है स्प्रिंग काइल का वो कितना होगा. तो आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल डी नॉट, ये किसके बराबर होता है, मीन डायमीटर प्लस डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, दैट इज डी प्लस स्मॉल डी, राइट. तो ये आपका हो गया 19.32 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 23. राइट, ठीक है. तो यहां से आप देखिए दिस इज 23.32, जो डायमीटर ऑफ द केसिंग क्या था 25 mm, राइट. तो इसका मतलब है टू चेक द डिजाइन, टू चेक दिस, to check the design of the spring, यही कर रहे थे ना, to check the design. तो आप कह सकते हैं outer dia of the spring coil, outer dia of the spring coil is less than
the dia of casing, that is 25 mm. यही था. So therefore design of a spring wire, that is T is equal to 4 mm is safe. समझा गया? चेक हो गया आपका कि जो हमने अज्यूम किया था 4 mm डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, सो उसको अज्यूम करने के बाद जब हमने आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग काइल कैलकुलेट किया तो दिस डायमीटर इज 23.32 mm. So this diameter is less than that of the diameter of the casing where the spring is enclosed. So it means the parameters which we have taken, that is a small d 4 mm and the mean diameter which we have calculated, that is 19.3 mm. These two parameters, that is within the limit. These are safe. What the design we want to calculate, right? So ये आपका आ गया. This is the first part we have done. Now your second part is, second part क्या था इसमें? Second part is your, what we have to calculate? I just love it. I will see from here. Calculate the maximum shear stress. Calculate. Second part is calculate the maximum shear stress. ठीक है. सेकंड क्या हमें निकालना है? मैक्सिमम shear stress we have to calculate. तो पहले आप लिखिए इसका फार्मूला. shear stress, this is equal to K into 8 d pi dq, right? Right. So all the parameters we are having, only we have to calculate the well stress factor. और well stress factor कहां से calculate करेंगे? Where K is well stress factor. This is K is equal to 4C minus 1 divided by 4C minus 4 plus 0.615 upon C, right? Because we are considering the effect of the temperature, right? तो जो K की वैल्यू आप निकालो, C की वैल्यू आपको मिली है, जो आपने कैलकुलेट किया था आपका, तो C आपका इसमें क्या आएगा? D upon D. So you can say 19.32 divided by 4. This is 4.83. This is your 4.83, and by substituting the value of C here, तो आप K निकालो. K is equal to 4 into 4.83 minus 1, 4 into 4.83 minus 4 plus 0.615 divided by 4.83. तो जहां से आप K की वैल्यू निकालो and you substitute all the values here. This is given to you. K is given, 8 is given, W the actual load that you will take 1000 Newton, and D is diameter that we have calculated 19.32 pi and D
4 mm. So you substitute all the values and calculate your problem. I think it's okay. Now the next problem, we will move to the next problem. These are some basic questions, and I'm just taking up the basic questions so that you can understand that how we will start it. Right? Now we will go to the design of the helical spring. इसमें क्या-क्या parameters we have to calculate when we have to design whole of the spring. So just I will take one problem here, and first I will write down the problem and then I will start calculating it. Right? See here. This is the next problem. इसमें क्या है? Design the helical compression spring. For maximum load, this is given 1000 Newton for a deflection of 25 mm. Using the value of spring index C is equal to 5. Maximum permissible shear stress for spring wire is 420 MPa and modulus of rigidity, this is 84 into 10⁻³ Newton per mm square. And the band stress factor, this is also given. So you see here, इन्होंने क्या लिखा? Design the helical compression spring. तो सबसे पहले I will write down the given. आपको दिया क्या है ये आप लिख लीजिए. Maximum load, that is W. This is given 1000 Newton. For a deflection of 25 mm, so deflection is also given. This is 25 mm. Using the value of spring index C is given to you. This is 5. This is spring index. Maximum permissible shear stress for spring wire is, so tau max, this is given how much? 420 MPa, and the modulus of rigidity, this is given 84 into 10⁻³ Newton per mm square. Whereas band stress factor, here it is given in the problem. So this is equal to 4C minus 1, 4C minus 4 plus 0.615 upon C. So these things are given to you. Now, first I will try to understand, I will explain this. You have to calculate the design. I think there is no need to write it down because I have taken all the values here. So for giving some space to write down here, I will just copy it off. देखिए सबसे पहले फर्स्ट हमें व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज वी हैव टू डिजाइन द क्लोज गाइड कंप्रेशन स्प्रिंग. राइट, हमें हमारा क्या है कि हमें डिजाइन करना है. व्हाट वी हैव टू डिजाइन? द हेलिकल स्प्रिंग. डिजाइन है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग. सो दिस इज डिजाइन ऑफ helical compression spring. देखिए जब आपने स्प्रिंग को डिजाइन करना है तो आपने क्या क्या चीजें इसमें डिजाइन करनी है. व्हाट द पैरामीटर्स यू हैव टू डिजाइन इन दैट. पहले these parameters should be clear in your mind that these things you have to design. And then you will use some formula that how you will calculate them. तो देखिए first parameter जो है, if you will see what is given here, देखिए इसमें जो सबसे मेन स्टार्टिंग में डिजाइन जो होगा जब आपने स्प्रिंग को डिजाइन करना है तो फर्स्ट डिजाइन इज योर दिस डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग वायर. स्प्रिंग वायर का डिजाइन करना है इन पैरामीटर्स के ऊपर. ये जो एक्शन लोड कितना है 1000 न्यूटन है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है 420 MPa.
तो इसके ऊपर हमें, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो किसका बना है, दैट इज मेड ऑफ वायर, उसी को हमने कॉइल इन शेप ऑफ कॉइल वी हैव गिवन। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर, देन उसको एक कॉइल की शेप में हमने स्प्रिंग देना है। सो देन सेकंड पॉइंट इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, राइट। सो दीज थिंग्स, mean diameter of the spring coil, outer diameter of the spring coil, these things can only be calculated. First you calculate the spring wire. जब तक आप स्प्रिंग वायर को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज मीन डायमीटर आपका क्या होगा, स्प्रिंग इंडेक्स इज गिवन हियर, सो स्प्रिंग इंडेक्स मींस d upon d। तो डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल कैपिटल D तभी निकाल पाएंगे व्हेन यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग वायर डायमीटर। तो डायमीटर, मीन डायमीटर निकालने के लिए भी आपको स्प्रिंग वायर डायमीटर निकालना पड़ेगा, D की वैल्यू निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, what are the parameters are given here. By using these parameters we will just think over that how we will calculate that, right? So start करें इसको, प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन देखिए, let d is your the diameter of spring wire, and the capital D, this is the mean diameter of the wire, right? Mean diameter of the wire. Okay. नो, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्प्रिंग डायमीटर निकालना है। तो देखिए यहां पे टाउ मैक्स आपको दिया है, as you know the formula, tau max, this is equal to K into 8 WD by dq, right? So this is given to you here, C is given here, this is equal to 5, right? So first of all we will calculate the value of K, Well's stress factor। तो पहले हम Well's stress factor कैलकुलेट करेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो K की वैल्यू निकालिए आप, तो K कितना आएगा इसमें, पुट द वैल्यू, C आपको दिया है 5, सो देयरफॉर K इज इक्वल टू 4 into 5 minus 1, 4 into 5 minus 4, right, plus 0.615 divided by 5. So calculate the value. What is the value of K here?